Hello everybody. So this session is our continuation of F5 LTM. So this session is about the last topic related to profile. So in this session, we are going to cover one of the important profile that is OneConnect. OneConnect, okay? And then we'll start another topic, okay? Another content, another session. In another session, we start another topic, we can say. So OneConnect profile. So it is very, very important to understand. Mostly it's also asked in the interview and it's also used in the productions why deploy, you know, F5 and at the times of implementations towards our backend server, as for the need from the application team, the team who manage that applications server, we can say. So what is OneConnect profile, guys? So, in F5 generally we have two-way communications. One is from F5 device. Okay, one is between the client and F5 LTM. So there are two-way communications. One from the client, which is generally on the outside on the internet, and client to the F5. So there is one connection, and another connection from F5 to the backend server. Okay, so whenever anyone accessing our applications, which is hosted behind our F5 load balancers, anyone from the internet, so every time it's create new connections. Okay, from F5 to the like we can say like client to F5 and F5 to the backend server. So every time it should be new connections. So it's kind of burden we can say load on our F5 and to avoid these things we can use OneConnect features. So in case of OneConnect features, it is for example if anyone from the outside is accessing our application which is hosted behind our F5, so F5 is going to use the existing connections, existing request to deliver that traffic to the single backend server. इन शॉर्ट आपको मैं बता दूं कि सेम कनेक्शन के यूज करके और डेटा को डिलीवर करना इफ एनी वन एक्सेसिंग फ्रॉम इंटरनेट, और आप बोल सकते हो कि क्लाइंट। ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा, वी कैन इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द एप्लीकेशन सर्वर। सो वन कनेक्ट फीचर्स इनहेंस वेब एप्लीकेशन परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस लोड ऑन सर्वर पर लोड भी रिड्यूस करते हैं बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ concurrent TCP connection made with outside the clients. In A5 local traffic manager, one connect feature is also known as connection pooling. Okay, सो वन कनेक्ट फीचर इज ऑल्सो नोन एज गाइस कनेक्शन पूलिंग। तो इसका आप ऐसे इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि वन कनेक्ट प्रोफाइल इज यूज टू फॉर द यूज द एग्जिस्टिंग कनेक्शन टू डिलीवर द डेटा इन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। आप बार बार ये पाइप को बैकएंड सर्वर से न्यू कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। सो इट्स गोइंग टू आप टाइम कंज्यूमिंग जो होगा, टाइम जो लग रहे हैं, लोड जो हो रहे हैं, इट इज गोइंग टू बी अवॉइड इट। ओके, सो फॉर दैट पर्पस one connect profile is used. Okay, so by keeping server side connection open and reusing them for new client connections, A5 local traffic manager uses HTTP 1.1 keep alive feature to implement one connect. So that is fine. So when new client creates TCP connection with A5 local traffic managers, LTM reuse existing TCP connection from connection reuseful instead of creating new. So guys क्या होता है कि अगर हम वन कनेक्ट प्रोफाइल के यूज करते हैं गाइज, सो इट्स मेंटेन लाइक रीयूज कनेक्शंस। क्या मेंटेन करता है? रीयूज, विल सी ऑल्सो, यू विल सी ऑल्सो, डोंट वरी अबाउट इट। रीयूज कनेक्शंस, फॉर एग्जांपल मान के चलो रीयूज कनेक्शन वन है। इफ यू नो, if anyone from internet trying to access the application which is hosted behind our F5, so it is going to the same connections which is present in the reuse to deliver the data in between client and server. So reusing, we are not creating new connection again and again, right? So it's create good impact related to performance, right? So F5 Connect most significant benefit is efficient utilization of system and resources. So this profile reuse ideal server side connection that can be used for further request. Okay, and F5 recommends apply HTTP profile to virtual server when using OneConnect profile. So virtual server में आपको HTTP profile attach करना, it is very important when you are using the OneConnect profile. Okay, it is not recommended to implement OneConnect profile for non HTTP virtual server. It's very important, guys, to understand this point. It is not recommended to implement OneConnect profile for non HTTP virtual server. जिस virtual server में HTTP profile called है, it is recommended to use only on that profile, that virtual server. It is also not recommended to implement OneConnect profile for the encrypted ट्रैफिक। इनक्रिप्टेड ट्रैफिक के लिए भी हम जनरली यूज नहीं करते।
ओके, सिर्फ प्लेन टेक्स्ट टाइप का ट्रैफिक के लिए हम यूज करते हैं वन कनेक्ट का। मोस्टली कंपनी यूज इट इज, ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोफाइल वी कैन से। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है कि वन कनेक्ट प्रोफाइल का क्या मतलब होता है। इसका यूज होता है to use the existing connection towards communicating with our backend server, which is hosted behind our F5, instead of creating new connection again. Okay, मैं आपको थोड़ा सा लाइव भी दिखाना चाहता हूँ गाइज। अगर मान के चलो कि मैं यहाँ पर कैप्चर करता हूँ, देखते हैं, बिकॉज दिस इन लैब इन्वायरमेंट, सो हम मैक्सिमम चीज तो अचीव नहीं कर सकते हैं, लाइक एक्चुअल थिंग्स विच हैपन इन द कंपनी, बट आपका प्रोसेस एंड द कंसेप्ट एवरीथिंग इज द सेम, वी नीड टू डू द सेम थिंग्स इन द कंपनी गाइज, ओके। सो अगर आप कैप्चर करते हो एंड 1.1 पे हम कैप्चर करते हैं एंड परफेक्ट एंड जो अभी प्रॉपर रिक्वेस्ट चल रहे हैं। सो मैं क्या करता हूँ, देखता हूँ मॉनिटर में क्या हमने इनेबल करके रखा है। जस्ट 1 मिनट, गो ऑन द लोकल ट्रैफिक एंड देन पुल एंड ऑन पुल लेवल एंड इन हेल्थ मॉनिटर्स आई अभी टीसीपी सभी में क्या करता हूँ इसको गाइज, इसको मैं अभी हटा देता हूँ जस्ट फॉर द, अभी मैंने इसको हटा दिया, अभी मैंने इसको हटा दिया। हटाने का रीजन ये है कि अभी कोई कनेक्शन बने ना, राइट। अभी क्या है कि कंटिन्यूसली कनेक्शन जा रहे हैं हमारे बैकएंड सर्वर की तरफ। सो अभी मैंने क्या किया गाइज, अभी देखो कनेक्शन वो रुके हुए हैं, राइट। ओके ओके, दैट इज फाइन। एंड इफ यू कम टू द वर्चुअल सर्वर, so this is our HTTP. It is unknown because we have removed the health monitor. Okay, let me initiate the traffic now. Okay, so I'm just trying to access our virtual server. HTTP 192.168.2.200. Okay, let me try from this PC maybe because I just added this PC, so I need to check the IP configuration and all. So don't worry about it. Okay, so HTTP, so it is working fine. Admin 123. Okay, and then we can stop it, and then again we can. I can open new. Just 1 minute, or let me close this, and again do the capture 1/1 interface. I want to show guys, if you are like if you are hitting 2 times, 3 times our virtual server, it is going to create a new connection again and again. That is the things I'm going to no, show you guys. Okay. So for this PC, I need to check the IP things because I just recently added it. So let me just close this. यहाँ पर मैंने स्टॉप कर दिया एंड देन वी कैन फिल्टर टीसीपी। सो देखो, sometimes it's making connection with 1.3, sometimes making with 1.2, sometimes making with 1.1 also. So it's not making the connection to the backend server। मतलब आप ऐसे शॉर्ट में समझो कि हमारा जो F5 है गाइस, दिस वन, इट इज नॉट गोइंग टू कनेक्ट एवरी टाइम टू द सेम सर्वर। इसका कनेक्शन जब भी हम रिक्वेस्ट एक्सेस कर रहे हैं फ्रॉम आउटसाइड, ये अलग अलग सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा है, मतलब न्यू कनेक्शन बन रहा है एवरी टाइम। ओके, इट्स क्रिएटिंग लोड ऑन आवर लोड बैलेंसर और मे बी आवर सर्वर। तो इस चीज को हम अवॉइड कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ वन कनेक्ट। तो इसको कैसे करना रहता है गाइस, आपको प्रोफाइल में आना है एंड प्रोफाइल में आपको अदर्स में एक वन कनेक्ट का यहाँ पर ऑप्शन आएगा, प्रोफाइल। देन वी नीड टू गो ऑन द प्रोफाइल गाइस एंड अदर, एंड देन वी नीड टू गो ऑन वन कनेक्ट। So by default, there is one connect profile is already there. I can create one custom one. So I can give the name like custom one connect. Just I'm giving name like this. Okay, it is using the parent profile, the actual one, and I'm keeping all the things as it is. And then I'm going to finish it. And then we need to go on the virtual server
And then we need to go on the HTTP virtual server, and then we need to go on the acceleration tab, navigation tab. So because this is the tab, part of acceleration, because we are doing something related to escalate our traffic, escalate our connections. और शो यहाँ पर हम वन कनेक्ट फॉर फाइल आप यूज कर सकते हैं जो हमने अभी क्रिएट किया है, देन वी कैन अपडेट इट. और अपडेट करने के बाद में गाइज वी नीड टू सी द कनेक्शन हियर, मॉडल स्टैटिस्टिक्स एंड देन and local traffic, and here we can use like just 1 minute for file summary, and here we need to come on the one connect. ओके आपको वन कनेक्ट पर आना है, आप स्टेप को जैसे मैं फॉलो कर रहा हूँ, वी नीड टू डू द सेम थिंग्स. ओके local traffic summary and for file summary, or here I am trying to do one connect. No, one connect, where is one connect? Just 1 minute. Or we can see like, let me do like for file statistics. Okay, so for file statistics we have only one thing, so it should be in for file summary only, and one connect. This is guys. Okay. So at the moment there is no any connection. There is no any new connection. There is no any total reuse. There is no any maximum. Currently I did nothing. So let me instead the traffic, and then we'll try to see. And then I'm going to refresh it. So total new connection in 8 guys, but it should show some reuse also. If it not so, that is fine, because in our case, we have only one PC from where we are trying to access it, but the concept and the process is same. And let me try from this PC and check the IP schema first, just 1 minute. So for this PC, what is the IP? Let me just cross check. ncpa.cpl, and this is the IP. Okay, so 2.10, and that is fine. So 2.100, that is perfect. And this is the interface. Interface 0 means 1. And let me configure IP, check the IP on this PC, so that we can initiate that connection from multiple PC, and then we can at least see the behavior. cpa.cpl. So it is 0, that is 1, perfect. And IP, okay, so we did not mention any IP here, that is the reasons. So 192.168.2.11 I'm putting here, and subnet mask same, and 192.168.2.100, this is our default gateway, and I'm just putting OK and close and perfect. And let me again initiate the traffic, try to access our virtual server, perfect, admin, and 1, 2, 3. So now we are trying to access that our virtual server IP, we can sell application server, HTTP application server from multiple PC, and then we'll see the behavior. So at the moment load balancing is happening properly. यहाँ पर भी मैं इसको initiate करके रखता हूँ traffic guys, and यहाँ भी आपको initiate करके रखता हूँ. Okay. Then we again will come to the F5 and we can refresh it. So I'm able to see like new connections every time it is increasing, but it should show total reuse also. Okay, total reuse should be there. So this is the concept actual guys. So I don't think like everything we can expect same behavior or exact result in lab environment, but the process is the same, concept is same, and we have done correctly, and we have attached it one connect profile, perfect. So that's it guys. So the process is same. So this is about one connect profile, and maybe we can see exact behavior, exact output once we'll do in the lab environment, sorry, in production.
Okay, so I hope this video is informative and knowledgeable for everybody. If you like my efforts, please share, like, subscribe as much as possible. Circle में share करो because there are so many people who want to build a career in network security, cloud security, cyber security, and उनको free में content available नहीं है. So this series is totally free, guys. So I hope this session was really helpful for everybody. Okay, thanks for your time and thanks for watching. Let's meet on the next session.